उनके फ्रूट्स, उनके आम रोडों पे बेच रहे हैं बेचारे गरीब, और वो बेच रहे हैं तो पुलिस वाले आके उनके फ्रूट्स को सीज कर रहे हैं और उनको चालान दे रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं कि 30 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम महमूद अली साहब और हम मिलकर वक्फ बोर्ड से टेम्पररी मार्केट के लिए अलॉट करते हैं। गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं खर्चना चाहती है तो ये फ्रूट वेंडर्स अपने पैसों से टेम्पररी मार्केट बनाने तैयार है। आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए, आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए। जमीन भी है, टेम्पररी बनाने के लिए भी वो तैयार है, नई मार्केट बनने के बाद जाने को भी तैयार है। और भी अगर कुछ है आप जो चाहते हैं बोलिए, वो भी उनसे बात करेंगे। लेकिन आप जहां पे बैठो बोल रहे हैं वहां नहीं बैठ सकते, वहां कारोबार नहीं हो सकता, रोड तंग है, वहां पे पूरा फ्रूट मार्केट खत्म हो जाएगी। और फ्रूट मार्केट की वजह से गवर्नमेंट को भी पैसा आता है। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमदर्दी के साथ फ्रूट मार्केट का भी देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल का भी देखिए। मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब हैं, मैं फिर से दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल को लीजिए, उस्मानिया हॉस्पिटल को भी बनाइए। निजामिया तिबी कॉलेज का आपने दौरा किया, आपका शुक्रिया साहब, मिनिस्टर साहब का। निजामिया तिबी कॉलेज और यूनानी हॉस्पिटल को जो चीजें थी हमने आपको दी, उसमें से बहुत सारी चीजें हुई हैं। बिल्डिंग रेनोवेट करने के लिए भी मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा। और उसके साथ ही साथ पैनल स्पीकर सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू मेक अ सबमिशन एंड अ रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब। सर, वी हैड अपॉइंटेड on contract basis in Telangana Institute of Medical Sciences few employees. Their contract is ending on 31st of March. We need to renew their contracts. All the staff working there, clinical and non-clinical staff, have made a representation asking the government to regularize their services. Yeah, please. Time, sir, I would like to make an appeal to the all government employees. One appeal to them कि सरकारी नौकरी के लिए आप बड़ी कोशिश करते हैं, एहतजाज करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, पास करते हैं, सरकारी नौकरी हासिल करते हैं, लेकिन नौकरी हासिल करने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल इंसाफ नहीं करते, मुकम्मल इंसाफ नहीं करते। ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शुड रियलाइज द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क टू द 100% कैपेबिलिटी, 100% कमिटमेंट एंड 100% बेटरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर सरकारी मुलाजिमीन अच्छा काम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी के लिए जिद्दोजहद जरूर करते हैं, नौकरी मिलने के बाद हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेता है। तो मैं अपील करूंगा सरकारी मुलाजिमीन से, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे सरकारी मुलाजिमीन काम नहीं करते, नहीं, बहुत सारे करते हैं। जो थोड़े बहुत जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि जिम्मेदारी को निभाइए। सर, गोइंग फर्दर एड, सर आई वुड रिक्वेस्ट द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर साहब टू टेल अस व्हेन दिस स्कीम वुड बी लॉन्च्ड। ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो भत्ता देंगे बोले उसके ताल्लुक से। एंड ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, थ्रू यू सर, अबाउट एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट सर, आई हैड गिवन अ सेवरल रिप्रेजेंटेशन सर, several representation in 2018, 2019, 2020, 2021, and again in 2021, once again I've given financial assistance and encouragement to Mr. M. Praveen Kumar, 9th World Cup kickboxing, sir. He got a gold medal in world competition. He hails from Old City, from my constituency. कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बार बार रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर हुकूमत इस पर भी गौर करेगी। और सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी conducts an annual summer coaching camps in rural and urban areas. Sports Authority of Telangana. सर, मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने शहर में भी ऐसे कैंप्स, समर कोचिंग कैंप्स रखिए सर।
और फिर सर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन हकीमपेट में है, स्पोर्ट्स स्कूल आदिलाबाद में, करीमनगर, वरंगल, और एकेडमी ऑफ साइकिलिंग, बॉयज एथलेटिक एकेडमी खम्मम, और फिर वनपर्ती, सरूनगर। मैं ये कहूंगा साउथ ऑफ हैदराबाद में भी ऐसा एक स्कूल डालिए सर। अगर ओल्ड सिटी में अगर कहीं जगह नहीं है तो साउथ ऑफ हैदराबाद महेश्वरम में मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा के एरिया में फैब सिटी में इतना बड़ा जमीन दिए हैं, एक 4-5 एकड़ उसमें से निकाल कर दे दीजिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट भी हो सकता है साहब, हम दे सकते हैं अगर चाहें तो। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड आई नो दैट अगर हुकूमत तय कर ले कि हां हम पुराने शहर में भी एक ऐसा स्कूल तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल जैसा हकीमपेट में है या दूसरे वनपर्ती में दूसरी जगह पर है, हम ओल्ड सिटी में भी लाएंगे तो जरूर मैं समझता हूं कि वो भी मुमकिन होगा। यह भी वादा किया गया था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम, बल्लागुड़े में स्टेडियम पेंडिंग है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्टेडियम का काम जल्दी कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ ही साथ यूथ सर्विसेज में हम जब आगे जाते हैं, ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, तेलंगाना स्टेट सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, सर इसमें तेलंगाना स्टेट सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन हैज एस्टैब्लिश्ड 7 skill development centers in the following districts. 7. One is Mahbubnagar, the second is Khammam, Yadrigutta is 3, Karimnagar is 4, 5 is Warangal, 6 is Devar, Yamjal, Medchal, Malkajgiri district, and 7th is Adilabad. सर इसमें हैदराबाद भी डाल लीजिए। एक ये स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बार बार कह रहे हैं सर, वी हैव अ नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर वहां पे नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में वी कैन एस्टैब्लिश, देयर इज एन ओपन लैंड, गवर्नमेंट कैन सैंक्शन फंड्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन कैन बी ट्रेनिंग अप, टेकन अप for this center for training employment promotion. We can have one center there, NAC, National Academy of Construction. बहुत सारे बेरोजगार बच्चे हैं पुराने शहर में भी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, and the programs which are conducted sir in this center in Mahbubnagar, Khammam, in Karimnagar and all, the first course is fashion designing. सर ओल्ड सिटी में भी है लड़कियां फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, so many applications have been rejected. So now the question arises कि if I don't have a ration card, whether a pink or a white, how would I avail a health services? ये गरीबों का फायदा होगा, हुकूमत को नेक नामी आएगी, अच्छे से आप कर रहे हैं, आयुष्मान भारत को भी आप इसमें लाए हैं। मेरी आपसे फिर से अपील है कि आप नए आरोग्यश्री कार्ड्स दीजिए, ऐलान करिए कि द वंस हु डू नॉट हैव आरोग्यश्री कार्ड्स कैन अप्लाई, और यह ऐलान करिए कि द वन हु डू नॉट हैव एन आरोग्यश्री कार्ड विल बी ट्रीटेड इन आयुष्मान भारत। एटलीस्ट कुछ तो आप उनको एक चीज दीजिए, बिकॉज बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास आरोग्यश्री कार्ड नहीं होने की वजह से दे आर सफरिंग सर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू वंस अगेन कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट the CCU charges needs to be relooked into sir. CCU के जो चार्जेस आरोग्यश्री में है बहुत कम है सर, बहुत कम है। एक दिन में वेंटिलेटर चार्जेस, बाईपास चार्जेस, और उसके बाद नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस और ऑक्सीजन, ये सारे चार्जेस को निकाल लेते हैं तो सर कई दवाखाने 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक भी लेते हैं, लेकिन आरोग्यश्री में सिर्फ 4,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें नहीं होगा। What is happening is that many hospitals are refusing critically ill patients and they are being asked and forced to make a payment. So kindly look into it, sir. It is very important and I hope that the government will look into the points which I have raised. And going further ahead on youth and employment, Honorable Speaker, sir, Chief Minister Saab had announced that 80,039 vacancies will be filled up through direct recruitment, and services of 11,103 outsourcing and contract employees will be regularized in all the departments in a time-bound manner, sir. Sir, ये ऐलान तो हुआ है. I don't know whether if I am right or wrong. Chief Minister साहब ने 11,000 आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को रेगुलराइज करेंगे बोल रहे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट
रेगुलर या दूसरे जुमरे में जो आते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, उनकी तादाद, हो सकता है मैं गलत हूं, उनकी तादाद 2 लाख से जायद है। तो आप अगर खाली इनको करेंगे तो विच आर द डिपार्टमेंट्स वेयर यू आर गोइंग टू रेगुलराइज द सर्विसेज ऑफ आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज? ये क्लियर आप अपने जवाब में बताइएगा। नो, वी वेलकम द डिसीजन, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू नो कि हाउ मेनी एम्प्लॉइज do we have in the state who are working as outsourcing, who are working as contract, or who are working as irregular or whatever it is, जो कुछ भी है। तो आप वो इसकी फेरिस्त दीजिए। Sir, however, nothing is known about the fate of unemployment allowance for the jobless. The TRS government in the manifesto has announced that they would give 3,016 रुपीस पर मंथ जो नौजवान जो बेरोजगार रहेगा। तो उस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब उस ताल्लुक से भी कुछ कहेंगे। और एंड ऑल्सो सर आई मे रिकॉल दैट in 2019 and 20 vote on account budget and allocation of rupees 1,810 crores were made for unemployment doles, but no provision was made in the 2019 and 20 full budget and subsequent budgets of 2021 and 21-22, sir. Sir, as per my information, I might be wrong. There are about 10 lakh jobless youth registered with the employment exchange in the state. 10 lakhs, sir. 10 lakh youth are there. Also, another 25 lakh educated youth have registered themselves with the Telangana State Public Service Commission as part of one-time e-registration facility. I do know this. The government cannot provide employment to one and all, but the government creates an infrastructure and government brings in multinational companies, IT companies and other companies which also generates employment. But at the same time, Honorable Panel Speaker, sir, through you, I would like to make an appeal to the people of state of Telangana. Kindly do not bring in hurdles in this recruitment. What happens always is that government come forward for a recruitment and someone goes to the court and stop this recruitment process. Scheme expenditure for primary health centers under Director of Public Health did not see any increase, and it was the same case with the allocation for prevention of control of diseases. Honorable Panel Speaker, sir, बार-बार कई मर्तबा मेरी पार्टी की जानिब से मैं उस्मानिया हॉस्पिटल का मसला उठाता रहा हूं। मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से अपील करता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप शहर के चारों तरफ आप हॉस्पिटल्स ले रहे हैं, चारों तरफ ले रहे हैं, आप उस्मानिया दवाखाने को भी ले लीजिए। उस्मानिया दवाखाने में खुली जमीन है, आप टावर्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। पुराने शहर में भी, साउथ ऑफ हैदराबाद में भी एक दवाखाने को लिए वैसे होगा। आप खुला जो है मैदान उसमें ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, उस्मानिया दवाखाने को नजरअंदाज मत कीजिए। और दवाखाने जो बना रहे हैं, हम इसका इस्तेकबाल करते हैं, तो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि फ्रूट मार्केट है, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, जहां पे अपने फ्रूट्स को बेचते थे, वहां पर आज एक दवाखाने का संग बुनियाद रखा जा रहा है और उसके बाद में कहा जा रहा है कि दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं पैनल स्पीकर साहब आपके जरिए महमूद अली साहब से, केटीआर साहब से और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से कहूंगा, दवाखाने की तामीर के खिलाफ नहीं है। मैंने एक प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने लास्ट सिटिंग में रखा था कि फ्रूट मार्केट को आप वक्फ बोर्ड की जमीन पर ला लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप नई मार्केट बनाइए, जरूर बनाइए। मैं सारे फ्रूट वेंडर से लिखाकर दस्तखत कराकर देता हूं कि जैसे साल 2 साल में फ्रूट मार्केट तामीर हो जाएगी,
वो वक्फ बोर्ड की जमीन से नए फ्रूट मार्केट में चले जाएंगे। लेकिन आज वो लोग रोड पर हैं, कई खानदान मुतासिर हैं। हमदर्दी के साथ इस मसले को देखिए। जरूर मैं कहूंगा कि दवाखाना आना चाहिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उनको मिला, लेकिन उसके बाद भी डिमोलिशन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पे दवाखाना नहीं बनाइए, बिल्कुल बनाइए, दवाखाना जरूरी है, लेकिन इन गरीबों का भी सोचिए। ये गोइंग फर्दर एट फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट टू मेडिकल एंड हेल्थ, सर, आई कांग्रेचुलेट द तेलंगाना गवर्नमेंट according to the health index report titled the health states progressive India report on ranks of state and union territory, the state improved from its previous 4th rank to be placed 3rd on the overall health index for the year 2019, sir. I congratulate the Telangana government for that. Sir, Telangana overall performance as well as incremental performance on various parameters put it in the 3rd place among larger states behind Kerala and Tamil Nadu. While for medical and health, rupees 5,707.50 crore allocated in financial year 2021 and actual expenditure account was 5,944.69 crore. Additional expenditure was rupees 227 crores and rupees 5,816.52 crores were allocated in revised budget in financial year 2021-22. The allocation has been raised to rupees 10,711 crore in the budget for 22-23, marking a substantial increase of rupees 4,894 crores in the share number, sir. So the breakup of the proposed allocation is rupees 5,743 crore under scheme expenditure and rupees 4,968 crores under established expenditure. It's a welcoming sign that the health sector has got a much needed boost, with budget allocation for the financial year 22-23 being 78.5% more than the current fiscal year, even as Telangana government seeks to build a robust healthcare network across the state, sir. Sir, for 22-23, the allocation has been increased for various schemes under the scheme expenditure. Rupees 1,000 crores for construction of medical colleges and hospital and rupees 1,000 crores for construction of super speciality hospital. The allocation for these two categories in current fiscal year was almost zero. The allocation has been increased for purchase of surgical consumables, diagnostic reagents and disposables. The allocation for the National Program for Prevention and Control of Cancer and Diabetes and Cardiovascular Disease and Stroke has been raised from only rupees 5 crores in the current financial year to 308 crores for the next year, sir. I congratulate Urdu junior colleges and the teaching staff, the issues related to Urdu degree colleges and the post. I would like to bring across to you the DSC, the de-reservation, which we were demanding. And at the same time, as strict as mandatory for teacher recruitment, the government is arranging to conduct the qualifying examination, but the state government is not conducting TET examination since the last 4 years. We request the government to conduct the TET examination at the earliest to fill up all the vacant teacher posts in Telangana. There are 12,500 students doing D.Ed courses and 15,000 students doing B.Ed courses. About 1.7 lakh D.Ed diploma holders and 1.7 lakh B.Ed graduates are waiting for TET TET exams. Sir, intermediate, there are 405 government junior colleges with 1.96 lakh students under the Board of Intermediate Exam Education. According to the note of demand for higher education for 22-23, there are 6,008 sanctioned junior posts, out of which only 746 are working and 5,262 are vacant. That means 87.58% is vacant. This is a very serious matter which needs to be looked into. Hence, 3,584 contract faculty and 194 minimum time scale junior lecturers are working against the sanctioned post, and for the remaining 1,484 vacant posts, guest faculty is engaged. Now going
towards higher and technical education. So far as higher education is concerned, two issues are awaiting an early decision by the government. The first issue relates to the proposal of the raising the retirement age of university teachers and government degree college teachers to 65 years. And the second issue pertains to the agency for recruitment of the university and degree college teachers, whether it could be done by the Telangana State Public Service Commission, the Telangana State Council for Higher Education, or a new recruitment board to be constituted for the purpose. ये बहुत जरूरी बात मैं आपके जरिए हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे उठाए गए इस मसले पर हुकूमत न सिर्फ संजीदगी से गौर करेगी बल्कि अपने मादरी जबान में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए उनको सेकेंड लैंग्वेज उर्दू देगी. और And sir, after the formation of Telangana state, the number of residential schools for the weakest section has gone up from 298 to 973, including the residential schools open up for the minorities and backward classes. Staff also requires to be increased. And the increase is the reason of COVID and post-COVID, I would say. Because of COVID, many people have lost their livelihoods, and because of various other reasons, the economic condition have really come down, and the poor parents were forced to take their students out from the private schools and get them enrolled or get them admitted in the government schools. Sir, when there is one issue which needs to be addressed, sir, what is happening, like I'm giving an example, one child was studying in a private school, and because of the economic distress and economic slowdown and loss of job, the parent of that student was forced to get the student admitted in government school. And when that student is going for an admission in government school or any residential school, there they are asking and demanding for a TC. And the private schools are not giving the TC, saying that first you clear the fees is due, then we will give you the TC. So what is happening is that, sir, in this, it is like we are forcing a child to drop out from studies. This is a very important issue, and I hope that the Ministry of Education will make a note and Honorable Minister will intervene and give clear instructions to all the private schools that if any student wants to discontinue from any private school and taking an admission in government school or residential schools, no TC should be asked. They should directly be admitted in government schools without a TC. This is a very important issue which I am bringing to your notice, Honorable Deputy Speaker, sir. Sir, I have made the same issue raised when I was speaking on budgets also, sir. But Honorable Finance Minister had not replied, and I hope that the Education Minister would give me this, the reply for this. I request the government to decide on these two issues immediately so that the vacancies in higher education department are filled up in next academic year. Honorable Panel Speaker, sir, in May 2021, the state government has appointed Vice Chancellor for 10 state universities. But once again I say, not a single VC from the minority community was appointed. Also, since the inception of State Council for Higher Education in undivided AP and formation of Telangana State Council for Higher Education, not a single member of minority community was appointed as Vice Chairman or the Chairman of the Council. Why? Honorable Panel Speaker, sir, through you, I would like to bring to the kind notice of the government that for
Telangana State Council for Higher Education kindly nominate a member of minority community and also appoint a vice chairman or a chairman of the council. This will give a good sign and a signal that this government is a minority friendly government. And I know that कि ये मुस्लिम दोस्त हुकूमत है, माइनॉरिटी दोस्त हुकूमत है, गरीब दोस्त हुकूमत है, किसान दोस्त हुकूमत है और नौजवान दोस्त हुकूमत है, हर एक की दोस्त है. इसलिए तो हम भी आपके दोस्त हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक रुकन अगर इसमें अगर डाल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है आपके लिए. कौड़ा रुपये देने की बात नहीं कर रहा हूं, एक रुकन देने की बात कर रहा हूं. दे दीजिए, एक अच्छा पैगाम जाएगा इससे. सर, and I also request the government to nominate a professor from the minority community to either chairman or vice chairman of the post. State universities have also not got the adequate funds from the government. Sir, the 8 also explain that to develop the government schools across the state, the scheme has been formulated with an outlay of 7,289 crores. Honorable Deputy Speaker, sir. Sir, in the first phase, a mandal is taken as a unit and 12 different types of works are being taken up in 9,123 schools with an outlay of 3,497 crores. I may recall here that the Finance Minister Saab in the state budget for the year 2021 and 2022 has announced the introduction of a new scheme for education with an outlay of rupees 4,000 crores and a budgetary provision of rupees 2,000 crores were made in the year 2021 and 22 for providing basic facilities in all the government schools on a large scale. Sir, under the scheme, the government would take up construction of new buildings for schools located in rental premises, repair of school building and provision of necessary furniture, toilets, other facilities including use of digital technology in the classroom. I do not know how the same scheme can be launched twice, in the current year as well as in the next year. Sir, I can say that unnamed scheme of 2021 is now named as Mano Uru Mana Badi, and it has been launched by the Honorable Chief Minister Saab in Vanpatri earlier this week, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, in the current year itself, the government has decided to allocate rupees 2 crores each from CDP funds of rupees 5 crores for this scheme. The contribution of CDP funds by the legislatures, thus 160 legislatures, thus comes to rupees 320 crores. I would request that in the 16 mandals in Hyderabad district, all the government schools should be taken up in the first phase itself, as these schools are in very bad shape and lack of basic amenities. And when I make this demand, I have also heard Honorable Education Minister Sahiba saying that the enrollment in government schools have increased. Almost 3 lakh more students have enrolled when she was speaking. So when the students have increased, so it's obvious that the infrastructure also requires to be increased. लोग आगे बढ़ के अपने सर्विसेज दिए. अब कोरोना खत्म हो गया तो हम उनके सर्विसेज को खत्म ना करें और उसको किस तरीके से हम एकोमोडेट कर सकते हैं उसको भी देखना चाहिए. नहीं तो एक पैगाम ऐसा जाएगा कि जरूरत के वक्त हमारा इस्तेमाल हुआ, जरूरत खत्म हो गई और हमको फेंक दिया गया. ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं. सर, पैनल स्पीकर सर, Sir, in the Chief Minister Saab's statement on recruitment in government departments, the direct recruitment vacancies, Health and Medical Family Welfare Department is shown as 12,755. However, the total vacancies are 20,048, including the post against which outsourcing and contract staff are employed. Moreover, the sanctioned strength of Medical and Health and Family Welfare Department, according to Appendix A to the Budget Estimate 22-23, Volume 8/1, on employee strength of government department is 55,739 in 22-23
as against 48,981 in the current year of 21-22, indicating an increase of 6,758 posts, mainly in Director of Medical Education, in view of the opening of new medical colleges and new teaching hospitals. I understand this. Sir, I would like to know from the Finance Minister, Sahab, who is also the Health Minister, whether in computing the direct recruitment vacancies to be filled up as per the CM Saab statement, these new posts have been taken into consideration or not. This is very important. अगर आप पुराने वैकेंसीज को ले रहे हैं या नए कॉलेजेस के बाद में जो नई जरूरत होगी, जैसे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताल्लुक से भी कहा कि ओल्ड रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स, तो वो उन चीजों को ले रहे हैं नहीं. और बस्ती दवाखानों के लिए मैंने पहले भी मुबारकबाद दी थी हुकूमत को, दोबारा मुबारकबाद देता हूं. डायलिसिस सेंटर्स के लिए मुबारकबाद देता हूं, और जो लैब्स जो खोल रहे हैं इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं. मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया था और कहा था कि पुराने शहर में आप डायलिसिस के और सेंटर्स को भी लाइए. मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब जरूर इस पर भी गौर करेंगे और नए डायलिसिस के सेंटर्स ओल्ड सिटी में लाएंगे, और नए इन्वेस्टिगेशंस जो करते हैं उसके लैब्स भी आप लाएंगे. मैं फिर से आपसे मुतालबा करूंगा कि आरोग्यश्री के कार्ड्स 2014 में दिए गए थे, नए कार्ड्स नहीं दिए गए. आरोग्यश्री के रेट्स भी फिक्स हुए, बहुत पुराने हैं. प्लीज आप नए कार्ड दीजिए. ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस कि द गवर्नमेंट हैड कॉल्ड फॉर एन एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ न्यू राशन कार्ड्स, but so many applications have been rejected, not got the adequate funds from the government. So the 8 existing general universities are allocated rupees 678.88 crores in the next year's budget. Sir, through you, I also would like to bring to the kind notice of Honorable Minister KTR Saab. Yesterday, students from IT Basar had come and met me and spoken to me repeatedly on my phone, and they requested me to raise the issue of IIT Basar. They do not have a VC there. The food is very bad. The living conditions are very bad. All the students came to me and they were requesting, Akbar Saab, kindly raise the issues regarding. I will give one detailed letter to you, sir. Through you, sir, I request Minister Saab to kindly look into that. A representation has been received. People come with lot of hope to us and they request us to raise. That is the reason why IIT Basar issue, खाने में कीड़े निकल रहे हैं, वीसी नहीं है, उनके हॉस्टल में फैसिलिटीज नहीं है, नैक का एक्रीडेशन उनका नीचे हो गया. They were requesting, kindly I request you to look into that, sir. Sir, at the same time, sir, out of 1,268 sanctioned teaching posts in Osmania University, there are now only 415 regular faculty. I hope that these vacancies will be taken up. Honorable panel speaker, sir, when I speak about Osmania University, I would like to come on record and say that Osmania University is also on Waqf land, sir. With all responsibility, I am saying, sir. So in the earlier budget session, I had given the court judgments also. I have given the details. I have given the judgment of the revenue department. Then when it was appealed further, the high court judgment also I have given. But the state now is that, sir, Osmania University have locked all the roads which leads towards the Muslim graveyard, which leads toward the Muslim प्रेयर मॉस्क मस्जिद को जो रास्ता जाता है बंद कर दिए, खबरस्तान को जो जाता है बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए वीसी साहब. सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करना चाहता हूं, रास्तों को खोल दीजिए. सर, my colleague, my MLA Mr. Ahmed Pasha Khadri साहब had gone there. He had met the registrar also Osmania University. रास्ते बंद कर दिए ना पाशा कादरी साहब, मस्जिद का रास्ता बंद करें, दरगाह का रास्ता बंद करें, खबरस्तान का. काइंडली गिव इंस्ट्रक्शंस टू ओपन दैट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो रास्ते बंद करे हैं. सर, फर्दर अहेड सर, अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट सर्वे, एज मेनी एज 9,997 additional classrooms are required. 8,725 schools have to be provided with compound wall. 9,000 schools
need latrine and so on. Sir, now again my question is, when we have prepared this requirement, have we taken into consideration the increased number of enrollment which has come in the government schools? Or these figures are the old strength of the students? This needs to be clarified when Honorable Minister is going to give me a reply, sir. Sir, at the same time, I welcome the announcement made by the Chief Minister, Janab KCR Saab, in the Assembly on recruitment to be taken up in the state government department. Honorable Deputy Speaker, sir, a total of 91,143 posts are going to be filled across all departments and states, including regularization of services of 11,103 contract and outsourcing employees, and direct recruitment to fill up 80,039 vacancies. So over 26,500 vacancies of 91,143 are in the secondary and higher education department. And the figures include 5,500 contract and outsourcing posts and 20,964 direct vacancies. The direct vacancies again include 13,086 in secondary education and 7,878 in higher education department. Honorable Speaker, sir, through you, I request the government to ensure that all these vacancies in education department are filled up in a time-bound manner during the course of the next academic year. So the government has also initiated measures to introduce English medium in all government schools in states so that the poor students in these schools get opportunities on par with their counterparts in the private and corporate schools. While welcoming this move, we demand that Urdu should be offered as a second language to all the students whose mother tongue is Urdu, sir.